हाय गाइस, वेलकम बैक। इतने दिन हो गए मैं लगातार वीडियोस बनाई जा रही हूँ वन आफ्टर द अदर। आज मैंने सोचा आज फ्राइडे है, ट्रेडिंग खत्म हो चुकी है, 2 दिन की छुट्टी है। आज मैं क्वेश्चन आंसर्स करती हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सब क्वेश्चंस का आंसर करूंगी और होप दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट बेटर अबाउट एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस, अगर उस तरह का आपका कोई क्वेश्चन है तो। Before we go on to that, I'm your host, Dr. Seema Jain, SEBI-registered research analyst. You can follow me on Twitter. You can follow me on YouTube. You can follow me on my Telegram channel where I'm super active, right? To see you there on any of the platform that you feel is a comfortable for you. So हम शुरू करते हैं। जो मैंने latest video डाला था, ये वाला video, अगर आप देख रहे हैं, expect minimum 40 to 50% return, right? तो मैं इस वीडियो के कुछ कमेंट्स लूंगी and I'm going to take up the questions and then we will talk about it. So somebody has written that they have made money on Orient Bell and yeah, definitely. So first question that I'm going to take, the stock that I'm going to talk about is basically the one I have given here, PNC Infra. So the stock that I'm going to talk about in this video, I have talked about, is PNC Infra, right? अगर आप उसको वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, बहुत लोग आप क्या करते हो, बस स्टॉक सुनते हो, ना उसका एंट्री सुनते हो, ना उसमें री एंट्री सुनते हो, ना आप उसमें स्टॉप लॉस सुनते हो और स्ट्रेट अवे स्टॉक को ले लेते हो। मैंने इसमें बहुत क्लियरली बोला था कि हम 270 के ऊपर बाय करेंगे, राइट? और किसी ने पूछा है रीजन कि आप 270 पे क्यों बाय करोगे। Just see out here on this particular day, 17th March, the stock has taken a major resistance, right? It came down from this level, 269. So I have taken 1 point leverage and that's why I decided to enter above 270, right? अगर आपको ये छोटे छोटे फाइनल नुआंसेस स्टॉक मार्केट की पता होंगे तो कभी भी आप जल्दी एंट्री नहीं लोगे। नो सिंपल, अगर इसमें इस ट्रेड में एक एक्यूमुलेशन हो रहा है, राइट? यू कैन सी फ्रॉम हियर, this is a double bottom that is getting formed and this is an accumulation zone. So where will my entry, अगर मुझे इसमें एंट्री लेनी है तो मुझे सब जगह देख के लेनी है ना कि कहाँ पे पास्ट रेजिस्टेंस है, हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस कहाँ पे है इसमें, राइट? ये हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस है 268.8, इसका मतलब मैं 270 के ऊपर इसमें एंट्री लूंगी, राइट? अगर अब किसी ने इसी वीडियो के किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है वर्स्ट कॉल, I will accept if it is a worst call only when it crossed my entry point, right? 13.15 मिनट में मैंने बोला है कि एंट्री अबव 270। आपने मेरा वीडियो ध्यान से सुना ही नहीं, आपने उसमें एंट्री ले ली और कल स्टॉक जो है नीचे आ गया। बट एंट्री ट्रिगर होगी तभी तो आप मेरा स्टॉक देना है, वो वैलिड होगा ना। उससे पहले तो वैलिड ही नहीं है। वो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से या अपने फोमो से या अपने फियर ऑफ मिसिंग आउट से आपने एंट्री ले ली है। बट प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। हैव अ प्लान, राइट? आप भी तो प्राइस को देखोगे ना। ये तो नहीं है कि मैंने कुछ बोला और आपने उसमें एकदम से एंट्री ले ली। आप भी बैठ के देखोगे कि पास्ट रेजिस्टेंस कहाँ लग रहा है, कहाँ पे मुझे सपोर्ट है, कहाँ तक ये स्टॉक नीचे जा सकता है और फिर कहाँ से बाउंस होने की पॉसिबिलिटी है। वो सब तो आपको देखना पड़ेगा ना। प्लीज प्लीज कम ऑन गाइस, डोंट डू दिस, राइट? I will accept if it is a worst call, I will accept it. I have no issues because I have done my level best to find the best stock for you. And I've been not watching it for yesterday or 2 days back. I've been watching this stock for this entire journey. It's almost like 1.5 months that I've been watching this stock, right? With the fundamentals, with the information about stock, I've been watching it. Now it stands on the verge of breaking out. But where? कहाँ पे? 270 के ऊपर, right? So that was the first question that I wanted to answer. Then I will answer another question that I was reading. Yeah, so there is one question by Kalpit Tiwari. He's written that sheer knowledge, ma'am, I just bought Rosari Biotech at the rate 1600 and accumulated till it went to 920. My average stand at 1270 and with 1000 shares. What's your view? I have a time horizon of minimum 1 year. I will hold on to it. But do you recommend me averaging it at 1000 rupees a share? So let me tell you, Rosari Biotech is a very good stock, right? Just before answering this question, before I started video, I went through all the parameters and the stock looks really strong, right? In fact, if you want to average out,
a bit more quantity, it's okay. Otherwise, I usually don't prefer to take more positions, you know. I would rather rotate it in some other stock, right? Don't put all the eggs in the same basket, right? So let me just explain you Rossari Biotech with the help of its fundamentals. Just have a look at it. The stock is about, the company is about 5,368 crores. P is 68.3, which is a little high, and ROCE and ROE are very, very good, right? Have a look at the company's pros. Company has reduced debt, debt free. It's expected to give a good quarter. Company has delivered good profit, 87.27 CAGR over last 5 years, and company has returned good return on equity, which is about 27.22%. The only thing is that it's trading on a very high book value, right? So that's okay, but let's just go on and figure out, you know, what's happening to the sales. In last 3 years, sales have almost doubled, more than doubled, right? Then I just want to see what is happening year on year basis from 2011 till now. The sales have really grown up, expenses have grown up, and so is the operating profit. It stands at 128 crores, right? जहां पे 2011 में 13 करोड़ का प्रॉफिट था, आज like in the current quarter it is about 128 crore, which is again a very, very good thing. Then you have a look at the borrowings. Company is zero debt, not even a single rupee on debt. A very, very nice thing. Very few companies have no debt. And look at the reserves. They have multiplied. एक साल के अंदर, not even एक साल के अंदर, क्वार्टर के अंदर ही जो रिजर्व्स हैं वो डबल हो गए. Then let's have a look at the cash from operating activity. So always they have generated cash from the operating activity. So I think if we look into the cash from investing activity, so they have purchased some assets, right? That's why you see negative, right? That is why you see a negative out here. But I'm sure because of probably they want to increase their assets and they want to invest in their asset and building up their infrastructure. I'm sure this will reflect in their profit growth. So the Rossari Biotech is really looking good to me. So there's no need to worry. And there's one more point that I would like to tell you, that FIs have slowly building up their portfolio in this particular stock, right? In this, from 2020, they have doubled their stake. In fact, more than double their stake, right? Again, a very good sign. Investment by FIs is a good sign, but slight decline in the promoters holding, right? But that's okay. That's perfectly fine. And if you have a look at the DIIs, they are also maintaining 13% stake in the company. So far, looking at all of it, I find, the company's fundamentals very, very good. So continue holding. There's no issue about it. Then so somebody's made money 10% in Tata Power and Sharda Cropchem. Tata Power, and a huge thumbs up to you, ma'am. Thank you, Priyanka. Then I make my suggestion on Sundram Fasteners. So I will do my research and tell you. Right now, I'm not prepared for it. Then Ayushman Pandey saying आपका वीडियो बड़ा इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि हर वीडियो को 2 बार देखता हूँ. आप बहुत मेहनत करती है और आपके वीडियो से कंपनी की ज्यादातर आवश्यक जानकारी मिलती है और बाजार में रहना कठिन है. आप सरल बना देती है. सादर प्रणाम स्वीकार करें. थैंक यू आयुष्मान भव. So another comment that I would like to react. It is by interesting facts. He's written such a worst call. भैया वर्स्ट कॉल तो तब होगी ना जब ये ट्रिगर होगी. अभी तो ट्रिगर ही नहीं हुई है. वेट करो, आप देखो, इसको वॉच करते रहो. जिस दिन ब्रेकआउट आएगा उस दिन बताना वर्स्ट थी कि बेस्ट थी, राइट? अभी आप इस पे कमेंट नहीं कर सकते हो. अभी मेरी एंट्री आई ही नहीं है. और अगर आपने मेरा वीडियो नहीं सुना है, थोड़ा स्किप करके 13वें मिनट पे आओ. 13 से 14 के मिनट के बीच में आप सुनो, राइट? आपको सब एकदम बात क्लियर हो जाएगी. मैंने एंट्री कहाँ पे आपको बोली. देखो, स्टॉक मार्केट में ना जल्दीबाजी नहीं, आराम से. योर बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स अ लॉट, राइट? अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज हड़बड़ की है, फोमो की है कि ये मिस हो गया, ये चला गया ऊपर, you will not be able to make money. You have to be confident of what you're doing. You have to know exactly what the price is telling you. लोग क्या होता है कि एक ट्रेडिंग का कोई प्लानिंग नहीं होती है. लोग बोलते हैं ना, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान. बट प्लान के साथ तो आओ ना. आप सुबह सुबह प्लान बना के तो आओ. लाइक आज मेरा प्लान था सुबह आने का. मेरे को 100% था
कि मैं अल्ट्राटेक में ट्रेड करूंगी. I was 100% sure that I will trade in Ultratech, right? Because of the price was such, and I did trade into it. And I'm not lying to you. I'll just show you in a minute. So as I told you, I did trade in Ultratech because I'd come with a mindset that I will trade into this particular stock, right? I had planned and I executed my plan, right? आप अगर देखोगे अल्ट्राटेक को तो शुरू में ये स्टॉक नीचे गया है, राइट? 15 मिनट में ये स्टॉक नीचे गया है, राइट? फर्स्ट मिनट में, बट मुझे पता था ये फेक मूव है. Why? Because I have read the price, I have all the data points, so I knew ये फेक मूव है. जब ये नीचे जाके इसने रिवर्स करना शुरू किया, that's when I bought its call option, right? इसी तरह I had a plan to buy अशोक लेलैंड, राइट? अगर आप देखोगे तो आज मुझे बाय करना था अशोक लेलैंड को. फर्स्ट कैंडल वाज लाइक दिस, it came down, but when this reversal candle happened, I knew the stock is going to go up continuously, right? So have a plan before you come to the market. Just don't jump to anybody's call. You have to do your own research. It's your money that you're putting. I don't know who's putting money on my call, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने एंट्री एग्जिट सबको आप एनालाइज करो और स्टॉप लॉस को एनालाइज करो. बिफोर योर प्रॉफिट यू कैलकुलेट योर लॉस. कितना लॉस पॉसिबल हो सकता है उसको आप पहले कैलकुलेट करिए, राइट? तो आई थिंक इतना ही काफी आज के लिए. और आपके कमेंट्स होंगे, मैं फिर और आंसर करूंगी. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.